Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Welcome to this new lecture. Dear students, today we will study a very important topic of the chapter 3 enzymes, that is enzyme inhibitors. That what are enzyme inhibitors? This topic will also help you to understand the next topic of this chapter, that is feedback inhibition, right? Now, what are inhibitors, or how can we define inhibitor? Inhibitor, as the name indicates, means the one which inhibit, stop, or block. So, the substance or molecule that blocks an enzyme temporarily or permanently is called inhibitor, and the process is called inhibition. वो केमिकल सब्सटेंस और मॉलिक्यूल जो कि एंजाइम को यानी एंजाइम की एक्टिविटी को टेम्परली और परमानेंटली ब्लॉक करता है, स्टॉप करता है, इनहिबिट करता है, दैट सब्सटेंस और मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इनहिबिटर, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इनहिबिशन, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं एंजाइम इनहिबिशन. और इन अदर वर्ड्स, the chemical substances which inhibit the activity of the enzymes are temporarily or permanently are called inhibitors. वो chemical substances या molecules जो कि enzyme के activity को temporarily या permanently block कर देता है, they are called inhibitors. So from the definition, it is clear that inhibitors are of two types. One which block the enzyme temporarily, and the other which blocks the enzymatic activity permanently. So we have two types of inhibitors. The inhibitor which temporarily blocks the enzymatic activity, they are called reversible inhibitors, while which blocks the enzymatic activity permanently, they are called irreversible inhibitors, and this process is called inhibition, और इस process को हम कहते हैं enzyme inhibition. So for example, poisons like cyanide, antibiotics, and some drugs are inhibitors. The inhibitors may be found naturally. ये inhibitors naturally भी होते हैं cells में, and can be used artificially as drugs, pesticides, and research tools for experimental purpose. या इन inhibitors को साइंटिस्ट आर्टिफिशियली भी यूज करते हैं एज अ ड्रग्स, पेस्टिसाइड्स या रिसर्च टूल के तौर पे फॉर एक्सपेरिमेंटल पर्पसेस, राइट? नाउ डियर स्टूडेंट्स, वी विल स्टडी टाइप्स ऑफ inhibitors. So as earlier I mentioned you that there are two types of inhibitors: irreversible inhibitors and reversible inhibitors. Irreversible, they can't be reversed, they permanently block the enzyme, while the reversible, they can be reversed, they temporarily blocks the enzyme. And the reversible inhibitors are further divided into two major types, that is competitive inhibitors and non-competitive inhibitors. So we will study both these types of inhibitors. The first one is irreversible inhibitor. So what are irreversible inhibitors? The inhibitors that bind tightly or covalently to the active site of the enzyme and block it permanently are called irreversible inhibitors. वो inhibitors जो कि enzyme के active site के साथ tightly यानी covalently bonded हो जाता है, covalent bonds के through bind हो जाता है, attach होता है, और enzyme को permanently block कर देता है. Such inhibitors are called irreversible inhibitors,
right? So irreversible inhibitors reshape enzyme permanently by making covalent bonds. जो इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स होते हैं ये एंजाइम को परमानेंटली डिशेप करते हैं, उसके शेप को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो उसी वजह से एंजाइम क्या हो जाता है, वो परमानेंटली ब्लॉक हो जाता है और अपना काम करना छोड़ देता है। तो सच इनहिबिटर्स आर कॉल्ड irreversible inhibitors. For example, poisons, cyanide, heavy metals, for example, mercury, etc., and pesticides are some examples of irreversible inhibitors. Now, the second type of inhibitors are reversible inhibitors, which the name indicates that they can be, such inhibitors can be reversed. What does it mean? The inhibitors that bind weakly, not through covalent bonds, and can be removed easily are called reversible inhibitors. ये inhibitors enzymes के साथ bind होते हैं लेकिन फिर easily remove होते हैं. So such inhibitors are called reversible inhibitors. Which, in other words, the reversible inhibitors temporarily blocks the active site of the enzyme, and the process can be reversed by removing the inhibitors from the enzyme by increasing the concentration of substrate. मतलब जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया जाता है तो ये इनहिबिटर्स क्या होते हैं, फिर आसानी के साथ एंजाइम के एक्टिव साइट से रिमूव हो जाते हैं और एंजाइम्स क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं. So reversible inhibitors, they can be reversed, that is they temporarily blocks the enzymatic activity. Now dear students, as earlier we studied that reversible inhibitors are further divided into two major types. So now we will study types of reversible inhibitors. So the reversible inhibitors are further divided into two major types. One type is called competitive inhibitors and the other type is called non-competitive inhibitors. Now what are competitive inhibitors? Which have same shape. What is meant by same shape? Competitive inhibitors are those which have the structural similarities with those of normal substrates. Competitive inhibitors वो inhibitors होते हैं जो नॉर्मल सबस्ट्रेट ऑफ द एंजाइम होता है, तो उस नॉर्मल सबस्ट्रेट और इनहिबिटर का जो स्ट्रक्चर होता है, शेप होता है, वो क्या होता है, सिमिलर होता है. Competitive inhibitors are those which have the structural similarities with those of the normal substrate. That is, the structure of both substrate and inhibitor is similar. इस केस में इस तरह होता है कि सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल और जो इनहिबिटर मॉलिक्यूल होता है उन दोनों का जो स्ट्रक्चर होता है, शेप होता है, दैट इज सेम, सिमिलर, एंड देयर इज competition between the substrate and inhibitor to bind to the active site of the enzyme. क्योंकि सबस्ट्रेट और इनहिबिटर का शेप सेम होता है तो दोनों के दरमियान एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम के साथ बाइंडिंग के लिए क्या होता है, कंपटीशन होता है. Now dear students, look into this diagram, you will understand that what is meant, that what are competitive inhibitors. This is an enzyme, this is an enzyme, this is the active site of the enzyme, and we have two molecules. One is substrate molecule, S for substrate, and the other is inhibitor molecule, I for inhibitor. So आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर
मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर है दे आर सिमिलर, ये तकरीबन सेम है। एंड देयर इज अ कंपटीशन बिटवीन द सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर मॉलिक्यूल टू बाइंड टू द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। तो अब अगर यहाँ पे सबस्ट्रेट बाइंड हो जाता है तो नॉर्मल रिएक्शन होगा, लेकिन यहाँ पे अगर एक्टिव साइट में इनहिबिटर आ जाता है, इनहिबिटर एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम के साथ बाइंड हो जाता है, तो इनहिबिटर तो शेप में सिमिलर है सबस्ट्रेट का, लेकिन केमिकली तो ये डिफरेंट है। तो यहाँ पे जब ये एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम के साथ बाइंड हो जाता है तो एंजाइम इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकता, एंड दस इट ब्लॉक्स द एंजाइमेटिक एक्टिविटी। तो इसी तरीके से ये इस एंजाइम को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। सो द रिएक्शन इज लोअर, इसी वजह से जो रेट ऑफ रिएक्शन हो जाता है वो क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। सो इन केस ऑफ competitive inhibitors, such inhibitors, what are competitive inhibitors? Such inhibitors have structural similarity with the substrate. इन inhibitors का substrate के साथ structural similarity होती है, and both of which compete, मुकाबला होता है, for the same active site of the enzyme। आप देख रहे हैं कि दोनों के दरमियान सेम एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम के लिए क्या है, एक कंपटीशन है। इफ competitive inhibitor occupies the active site, the substrate molecule will be unable to combine with the enzyme, and hence the enzyme activity will be inhibited. But this inhibition is reversible type because the removal of the competitive inhibitor restores the activity of the enzyme. तो competitive inhibitors का सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के साथ स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी होती है और दोनों के दरमियान सेम एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम के लिए क्या होता है, एक कंपटीशन होता है। तो अगर ये इनहिबिटर मॉलिक्यूल एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम को ऑक्यूपाई करता है, यानी ये इसके साथ बाइंड हो जाता है, तो फिर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल एंजाइम के एक्टिव साइट के साथ बाइंड नहीं होगा और इसी तरीके से एंजाइम की एक्टिविटी ब्लॉक हो जाती है। लेकिन ये एक रिवर्सिबल टाइप ऑफ इनहिबिशन है। जब ये इनहिबिटर रिमूव हो जाता है तो फिर एंजाइम की एक्टिविटी रिस्टोर हो जाती है। सो सच रिवर्सिबल इनहिबिटर्स आर कॉल्ड कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, के इनमें कि यहाँ पे सबस्ट्रेट और इनहिबिटर मॉलिक्यूल में एक्टिव साइट, सेम एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम के लिए क्या होता है, कंपटीशन होता है, राइट। नाउ फॉर एग्जांपल सल्फोनामाइड टू पैरा एमाइनो बेंजोएट PAB। As you know that sulfonamide are a group of antibiotics। सल्फोनामाइड क्या है, ये एंटीबायोटिक है। और पैरा एमाइनो बेंजोएट जो है ये बैक्टीरियल ग्रोथ फैक्टर है। ये एक ऐसा फैक्टर है, प्रोटीन है, जो कि बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए क्या होता है, एसेंशियल होता है। पैरा एमाइनो बेंजोएट इज अ बैक्टीरियल ग्रोथ फैक्टर एसेंशियल फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ। तो ये जो सल्फोनामाइड होता है, इट हैज सिमिलर स्ट्रक्चर टू पैरा एमाइनो बेंजोएट। सल्फोनामाइड और पैरा एमाइनो बेंजोएट हैव स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी। तो जब सल्फोनामाइड पैरा एमाइनो बेंजोएट की जगह एंजाइम के एक्टिव साइट को ऑक्यूपाई करता है तो बैक्टीरियल ग्रोथ क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। सो दिस इज हाउ द एंटीबायोटिक्स इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, कि ये एज इनहिबिटर्स काम करते हैं। ये बैक्टीरिया के एंजाइम्स को क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं,
तो फिर बैक्टीरिया में जो ग्रोथ होता है वो क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। एंड सच एंटीबायोटिक्स विच stops the growth of the bacteria are called bacteriostatic. Now the second type of reversible inhibitors are non-competitive inhibitors. तो नाम से पता चलता है कि यहाँ पे सबस्ट्रेट और इनहिबिटर मॉलिक्यूल का शेप सेम नहीं होगा, उनमें स्ट्रक्चरल सिमिलरिटीज नहीं होगी। तो इसी वजह से यहाँ पे सबस्ट्रेट और इनहिबिटर मॉलिक्यूल के दरमियान एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम के लिए कोई कंपटीशन नहीं होगी, बल्कि क्या होगा, सो द नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स डू नॉट पोजेस स्ट्रक्चरल सिमिलरिटीज विद द सबस्ट्रेट एंड देयरफॉर डू नॉट compete with the substrate for the active site of the enzyme. तो नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स में सबस्ट्रेट इनकी सबस्ट्रेट के साथ कोई स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी नहीं है, और यही वजह है कि यहाँ पे ये सबस्ट्रेट के साथ एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम के लिए compete नहीं करते. So that is they are quite different in structure. Non-competitive inhibitors are quite different in structure from the substrate molecule and does not fit into the active site of the enzyme. जो non-competitive inhibitors होते हैं ये substrate molecule से इनका structure बिल्कुल मुख्तलिफ होता है, और इसी वजह से ये active site of the enzyme में fit नहीं होते, and therefore they do not compete with the substrate for the active site of the enzyme. तो अब क्वेश्चन ये है कि वहाँ पे competitive inhibitors में तो एंजाइम मॉलिक्यूल के एक्टिव साइट के लिए सबस्ट्रेट और इनहिबिटर मॉलिक्यूल दोनों के दरमियान कंपटीशन होता है। तो अगर इनहिबिटर एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम को ऑक्यूपाई करता है तो एंजाइम इनहिबिट हो जाता है। यहाँ पे नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स में कोई स्ट्रक्चरल सिमिलरिटीज नहीं है। They are quite different in structure from the substrate molecule and do not fit into the active site of the enzyme. यहाँ पे तो ये active site of the enzyme के साथ ये fit नहीं होते, क्योंकि ये structurally क्या होते हैं, substrate molecule से different होता है. So the question is, सवाल ये है कि how they inhibit the activity of the enzyme. तो फिर ये enzymatic activity को किस तरह block करते हैं, inhibit करते हैं, right? Now look into this page of your textbook that a non-competitive inhibitor molecule is quite different in structure from the substrate molecule and does not fit into the active site of the enzyme. तो जब ये active site of the enzyme के साथ bind नहीं होता, वहाँ पे fit नहीं होता, तो कहाँ पे फिर ये bind होता है, किस तरह ये नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर एंजाइम के एक्टिविटी को ब्लॉक करता है. सो इट बाइंड्स टू अनदर पार्ट ऑफ द एंजाइम मॉलिक्यूल. ये नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर मॉलिक्यूल एंजाइम मॉलिक्यूल के एक दूसरे पार्ट, एक दूसरे बाइंडिंग साइट के साथ बाइंड होता है. तो इट बाइंड्स टू अनदर पार्ट ऑफ द एंजाइम मॉलिक्यूल. ये नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर मॉलिक्यूल एंजाइम के दूसरे पार्ट, दूसरे एंजाइम में एक्टिव साइट के अलावा एक दूसरा बाइंडिंग साइट भी होता है, उसके साथ बाइंड हो जाता है, उसके साथ अटैच होता है, चेंजिंग द शेप ऑफ द होल एंजाइम. पूरे एंजाइम का शेप चेंज करता है इंक्लूडिंग द एक्टिव साइट, और पूरे एंजाइम के साथ एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम का, जो एंजाइम का एक्टिव साइट होता है उसका शेप भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है. So that the substrate cannot bind to the active site and its activity is blocked. तो जब एक्टिव साइट का शेप चेंज हो जाता है तो फिर सबस्ट्रेट उस एक्टिव साइट के साथ बाइंड नहीं हो सकता, और इसी तरीके से एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो जाती है, ब्लॉक्ड हो जाती है. नाउ व्हाट इज दैट another part? What is the other binding site जिसके साथ नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या होता है, बाइंड होता है? Poisons like cyanide, heavy metals, heavy metal ions and some insecticides are
all non-competitive inhibitors. जितने भी poisons है ये सब क्या है? Non-competitive inhibitors है. So dear students, look into this paragraph once again, that the non-competitive inhibitors binds to another part, to another site of the enzyme other than the active site. Enzyme molecule changing the shape of the whole enzyme including its active site. Active site का shape भी change होता है, so that the substrate cannot bind to the active site and its activity is blocked. The other binding साइट इज कॉल्ड एलोस्टेरिक साइट. तो जो एक्टिव साइट के अलावा जो दूसरा पार्ट यहाँ पे लिखा है आपके बुक में कि अनदर पार्ट ऑफ द एंजाइम बाइंड्स टू अनदर पार्ट ऑफ द एंजाइम, तो वो दूसरा बाइंडिंग साइट क्या है? द अदर बाइंडिंग साइट इज कॉल्ड एलोस्टेरिक साइट. एलो मीन्स डिफरेंट, स्टेरिक मीन्स साइट. Now dear students, in order to understand the concept of non-competitive inhibitors, look into this diagram. आपने theoretically तो पढ़ा, लेकिन अब इसको diagrammatically देखे, इंशाल्लाह it will be clear to you. You will understand the concept of non-competitive inhibitors, that how they inhibit the enzymatic activity. Look into this diagram. This is an enzyme. This enzyme has a site called active site. This is the active site of the enzyme, while this enzyme also has another binding site which is called allosteric site. Allo means different, steric means site, and such enzymes which have allosteric site are also called allosteric enzyme. So this is an allosteric enzyme having active site. This is the active site of the enzyme. This is the substrate molecule, S for substrate, and this is allosteric. This one is allosteric site. Now, when there is no inhibitor, जब inhibitor नहीं है, तो substrate binds with the active site of the enzyme, and normal reaction take place. Normal reaction take place or normal reaction occur in the absence of inhibitor. जब inhibitor नहीं है तो substrate active site of the enzyme के साथ bind होता है और normal reaction होता है, और enzyme इस substrate को product में change करता है. लेकिन if there is inhibitor molecule, but if the inhibitor molecule is present, लेकिन ये वाला हमारे पास ये जो brown shape में आप देख रहे, this one is inhibitor. Now look into this. This is inhibitor. अगर inhibitor है तो फिर क्या होता है? The inhibitor binds to the allosteric site. ये inhibitor allosteric site के साथ bind होता है. तो अब आप डायग्राम को देखें. Now look into the shape of the active site. The inhibitor changes the shape of the active site. जो enzyme का active site है उसका shape change होता है. So as a result, the substrate cannot bind to the active site, and thus the activity of the enzyme is blocked. This is how the non-competitive inhibitors work. This is the concept of non-competitive inhibitors. कि अगर, और इस inhibitor को हम कहते हैं allosteric inhibitor because it binds to the allosteric site of the enzyme. तो हमने पढ़ा था ना कि non-competitive inhibitors bind to another part of the enzyme molecule, changing the shape of the enzyme including its active site. So as a result, the substrate cannot bind to the active site and the activity of the enzyme is blocked. So this is all about inhibitors, the types of inhibitors. Hope that you have understand the idea. Thank you.